So hey guys, what is up? Welcome back to yet another episode of the podcast Bro Talks क्योंकि भाई तुम्हारा बात करेगा. Guys, today's podcast is coming out of a book that is Chanakya in the Classroom, written by the amazing author Mr. Radhakrishnan Pillai. He has all of his studies on the Chanakya Niti only. So I bought this book last year in the lockdown, and while I was reading this book, I came across this amazing concept of Anvikshiki, that is actually the science of how to think. Well, Anvikshiki has many other definitions, but the basic one, or which we'll be considering in this podcast, is how to think. The science behind how you think, what are the aspects of thinking, and all. So stay tuned and let's roll further in the podcast. So the first aspect of how to think is the importance of logical thinking. Let me tell you, logic in ancient Indian system was called as Nyaya. So logic basically tells you that do not do whatever everyone is doing, just because everyone is doing this. ठीक है, जो सब कर रहे हैं वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो मैं कहूँ वो तुम्हें सिर्फ मेरे कहने पे करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ तुम्हें कि जा भाई वहाँ गड्ढा खोद के आ जाओ, तुम कहो क्यों, आई सी नो लॉजिक बिहाइंड डिगिंग अ होल देयर. बट अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जा वहाँ गड्ढा खोद के आ, मैंने पैसे छुपाए, पैसे निकाल लियो, 80-20 कर लेंगे, तो तुम्हें कोई लॉजिक दिखाई देगा उस चीज़ के पीछे. सो यू विल बी लाइक ओके, आई कैन कंसिडर दिस ऑप्शन. या फिर अ वेरी बेटर एंड रिलेटिव एग्जाम्पल इज, सबने साइंस ले ली तो मैंने भी ले ली. There was no logic behind taking science, but you just took it because everyone was taking it. यहाँ पे तुमने अगर अपना लॉजिक लगाया होता कि एक तो वैसे ही साइंस मैथ्स में नंबर नहीं आए, हाँ इंग्लिश एसएसटी हिंदी में अच्छा किया मैंने, सो आई कैन टेक आर्ट्स वगैरह, तो दिस वुड हैव कॉल्ड अ बेटर डिसीजन. तुमने थोड़ा अपना लॉजिक लगाया होता, समझ रहे हो ना. लॉजिकल थिंकिंग बेसिकली वो मत करो जो सब कर रहे हैं, हाँ तब करो जब तुम्हें उसके पीछे कोई पॉइंट दिखाई देता है कि हाँ ये क्यों करना है ना, वो क्यों जो है, वाई शुड आई डू दिस, दैट कम्स टू फाइंड अ लॉजिक. और इसी में एक और एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है, दैट एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग इज एक्चुअली कवर्ड देयर. रीजन वाई यू आर डूइंग दिस, will when you will reason, you will find the logic behind it. As soon as you find a logic, start doing it if you like it. The second aspect of thinking is the importance of scientific thinking. ठीक है. तो let's make it short and get with that example only which is given here. Example ये मान लो, एक जगह पे कई सारे लोग रहते हैं और वो मतलब कई बार they fall ill regularly. So one reason that we can, or one of the conclusions to which we can come is that that place is cursed by God or any of the people, so that they just fall ill regularly. Or we can find out that why actually they fall ill. ठीक है, वो तो एक साइंटिफिक तरीके से तुम पता लगा सकते हो ना, दैट व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दीज पीपल फॉलिंग इल रेगुलरली. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर क्या कहते हैं, decisions or assumptions on anything religiously, first at least look at the science behind whatever is happening. That would help you to understand things better. The third aspect is actually the importance of reasoning, which I just covered in the first point. Reason why you should do this. As soon as you get the reason why you should do this, and if you see the logic behind it, basically जब तुम reason करोगे तो you will find a logic to why people are doing this, and if you want to do this or not, and then do this if you want to, or don't if you don't want to. The fourth point is the importance of strategic thinking. Very good and important point. ठीक है, strategize whatever you are doing. Strategy seems a very complex word, right? It basically means planning and execution. Planning and executing according to that plan is your strategy, whatever strategy you use, right? For example, you made a timetable. That timetable is a strategy to how to spend your day. For example, you want to stand first in the class or first in any of the skills you are acquiring, and you made a strategy that इतने दिन में मुझे ये ऐसे ऐसे करना है, and you go according to that, and you see the results coming, and you find yourself at the first position or whatever desired positions you set for yourself. You actually did the strategic thinking and you get succeeded. एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि रिमेंबर नो स्ट्रैटेजी इज सक्सेसफुल टिल यू गेट टू द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स और गोल्स. तो अगर वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं है, मतलब तुम उस गोल तक नहीं पहुँच रहे हो, तो चेंज दैट स्ट्रैटेजी, नॉट द गोल, डू चेंज द स्ट्रैटेजी. ठीक है. The fifth point is, that's a very good point, it is the importance of critical thinking.
ही सेज वन हैज़ टू बी क्रिटिकल. ठीक है, डोंट सी जस्ट वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट और वॉट एवर यू आर एक्चुअली सीइंग. अपने बारे में भी सिर्फ लोगों को अपनी अच्छी बातें बताते रहोगे तो अच्छी बातों से सब अट्रैक्ट हो जाते हैं यार, समझ रहे हो. To make a good analysis of yourself and come to a conclusion on what you have to do and what not comes with the ability of knowing how to think critically, how to include both of your strengths and weaknesses and to come to a conclusion on basis of that. ठीक है, do not ever make a judgment about or by just knowing one side of the story. You should know the both sides of the story. That is very very important, right? खुद के अंदर अपना एक छोटा सा हाई कोर्ट बना के रखो बेसिकली, समझे. यहाँ पे लिखा है अ गुड स्टूडेंट शुड बी लाइक अ गुड जर्नलिस्ट. अ जर्नलिस्ट मे हैव एन ओपिनियन अबाउट अ सब्जेक्ट बट ही और शी विल रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल और रिपोर्ट. He or she will look at the both sides of the coin, study the good and bad, and only after forming her own judgments about the subject or the person will write the article supported by facts and data. So it is very important for you to think critically. This helps you, write better articles and essays also, and to evaluate yourself in situations in a better manner. So I hope you like that episode. If yes, make sure you press that like button, subscribe to the podcast on whatever platform if you're listening to. और हाँ बेटा अगर YouTube पे सुन रहे हो, सॉरी और हाँ भाई अगर YouTube पे सुन रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट डाल देना, शेयर कर देना अगर पसंद आया हो तो, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में.